Hello, Assalamu alaikum, everyone, and welcome to our third panel of the day. I just want to tell everyone that this is our road to International Women's Day, or आज हम multiple panels hold कर रहे हैं. And please do log on to our page, Woman to Woman Forum, on Facebook, on YouTube, and you can reach out to all our panelists. अगर कोई questions and answers हैं, you can also reply there. आज और कल दोनों दिन panels होंगे, and this is your chance to get connected with us. So please do join us at Woman to Woman Forum on Facebook and YouTube. And today, I'm Sabina. I'm one of the executives for Women to Women Forum. I usually work on the marketing and branding part of this nonprofit. And आज हमारे साथ हैं Sadia Khan. She's a data analyst and she's a mother of 3 children. I have Saira Butt. She's a homemaker and also mother to 3 wonderful boys. We have Iram Larak, who is the program manager for Empower Through Adventure. And we'll have Sheila Rupani and Nusrat Sohail joining us. Nusrat Sohail is the president of Women to Women Forum. And Sheila ji is also, she's into multiple businesses, banking and whatnot. And she's a mother to wonderful children. And she'll also be joining us and talking about the topic of ageism. Now, what is ageism? So, ageism is a discrimination against age. And a lot of the times, we commit this crime not knowing that we're actually committing it. It can be as little as कि अम्मी आप क्यों गाड़ी चला रही हैं मैं गाड़ी चला लूंगी and something of कि अम्मी आप इवेंट पे ऐसे आइएगा ये कपड़े पहन के आइएगा आई डोंट वांट टू लुक लाइक दिस और दैट तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम रियलाइज नहीं करते दैट वी गो थ्रू इट and so today's topic is about ageism. Assalamu alaikum everyone, to everyone joining us. Thank you so much, Nusrat ji, for joining us. And let's begin. I'm going to talk first about Empower Through Adventure Group. Ye group is a program of Women to Women Forum. It's led by Iram ji. And this year they went above and beyond. जहाँ पे वो every year लोगों को hiking पे लेकर जाते थे. There was some adventure trips such as skydiving and whitewater rafting. This year they took the leap of going on a trip to Las Vegas. Now, when we say Las Vegas, I know everybody starts thinking, oh, Vegas. No, it was not that kind of an adventure trip, but I'll have Iram ji explain the rest. So thank you, Iram ji. Please. Thank you, Sabina. Yes, so actually, Amara initiated this group. She's also our executive board. And then in 2020, I got involved in it very actively. And, when pandemic hit, we were all looking, ways to go out and, spend time with family and friends and, keep active and, take care of our mental and physical health. So I got active and just because I wanted some motivation so that Empower Through Adventure kept me motivated throughout, last 2 years. And, I met some wonderful friends there. So, and then, we started hiking. We do have every last Sunday of the month with our season starts from March and it ends on October. But what started happening in 2022, we started meeting almost every week, and we explored so many parks and hiking spot in surrounding tri-state that and I'm been living in New Jersey from 28 years, and I did not know about those parks. So that was a wonderful experience with these wonderful ladies. And in the beginning of 2022, we decided to take this further. And from our Empower group, we decided to go to Vegas. But again, as you said, when we say Vegas, we have this stereotype of Vegas. But what we had in mind that we're going to explore wonderful mountains there, and we're going to see how we act with each other and what we learned through this trip. And we did learn a lot, and we made more friends. That we had one Moroccan friend from our Empower group as well. So we explore wonderful, mountains in surrounding area, which the 3 places that I cannot forget, and I cannot wait to go back again with my family. And I kept saying there that I need to come back with my family. The Valley of Fire and Hoover Dam and the Death Valley.
these were the three, places we were just mesmerized, and we just didn't want to come back, but we had to. So Nusrat and Shela was the one who organized that, and I'm thankful, to both of them. Wonderful. And तो tell me कि जब आप अब वापस आए हैं इस ट्रिप से, and to let you all know, I believe Sadia ji and Sarah were also part of this trip. No, just Saira. Sarah Saira was was sadly, Sarah was part of this unfortunately, trip. had other तो commitments. Yeah. आप जब वापस आए, आपको आगे feedback क्या मिला? Because it's all of a sudden, all of you are ladies, all of you are married or committed to some kind of responsibility of children in some way. तो एकदम से क्या reaction आया था? I mean, it's not very common to see a lot of ladies just go on a trip. Actually, it was my first solo trip as well with friends. So I had a full support from my family, mashallah. And even my, friends were, very excited, and they actually wanted to know that, what we did and how was the experience. And I had so many ladies from community and from my friend circle wanted to join our Empower group, just because of this group, because they, found out what we did and how exciting it was. So, mashallah, our group, expanded more, and we have, such amazing, hikes and activities coming up in 2022. So I'm happy that, these women be able to, experience that as well. And Nusrat, I'm sure, will have more to tell you, and Saira. So, Nusrat ji, do you want to add on to this empowerment program and empower through adventure? You're mute. My bad. Sorry about that. So I will say uh, this kind of a venture cannot be possible with the right team and right group of people. And we lucked out. So what Empower Through Adventure Group has done, it has created us into a team. Sadia is part of that team too. She is a regular to our Empower Through Adventure hikes, and we have done skydiving also earlier, as we said, rafting, and many others, horse riding, but more of hiking. And due to that hiking, we network very closely. And those who went with us on this Las Vegas trip, we did stay in the heart of uh, Las Vegas, but we explored the immense beauty of that's surrounding Las Vegas, and the team we built after that. We seven of us are so close knit. Our host committee is mainly comprised of that group, and others who saw that, they complained that why didn't we inform them. So we did have a lot of fun, but it could not have been fun unless and until we all cooperated with each other and had encountered each other's tantrums or um, ailments. We are all older ladies, and then we at night we would have this jarga of like who's having such a difficult time in life. That's what we all thrive on. So it's a very soul connecting trip, and that's what the It's like beauty. sisterhood group, yeah. तो आपको feedback क्या मिला when you came back? Was it more positive? Did you get some remarks के oh you guys are elderly? ये कोई उम्र है जाने की ट्रिप पे या any of those? नहीं, क्योंकि मैं तो ये करती रहती हूँ, कोई मुझे कहे नहीं कहे, मैं अकेले कर लेती हूँ। तो मुझे बाद में ये हुआ, मेरी दोस्तें ये जो सब बैठी हुई हैं यहाँ पे, कहा कि तुम जो हो क्या रेड बुल पी के जाती हो? Why are you that hyper? Calm down. And I am labeled now ADHD after that. we had to stop Nusrat. I would And like take to a add point. one more thing. I'm part of this group, and the best part about the whole group is that it's kind of a no judgment zone. I mean, you can say anything. Nobody judges you based on anything. क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो. You can do whatever you want to do, and nobody's gonna judge you based on that. And So Wonderful. that's the best activity part. level as well, I will share, because we have different activity levels. Some can just walk, some can hike. So we don't judge. हाँ, Whatever उसमें you level can पे do. चलते हैं And सब लोग.
एंड Definitely. इरम जो है उनको पता है कि यदि कोई बहुत तेज चलता है तो वो अब 2-3 खवातीन आगे जा रही होती हैं, nobody says anything, और कोई आहिस्ता चलता है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई वो उनके साथ उनको जो है अकोमोडेट कर रहे होते हैं, और फिर आखिर में सब लोग मिलते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ फन। आई थिंक वी मुझे लगता है कि ये मेरा भी पहला सोलो था ट्रिप आफ्टर माय वेडिंग 25 इयर्स के बाद। यू मेक फ्रेंड्स, आप जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो, और हम लोग इसलिए थोड़े गए थे, जैसे अभी नुसरत ने कहा कि जी लोग कह रहे हैं हमें क्यों नहीं लेके गए, ह्यूज क्राउड होगा और उनकी और ज्यादा डिमांड होगी, उनकी और ज्यादा प्रॉब्लम्स और तरह की होंगी, सो वी वांट टू मेक श्योर दैट वी आर ओके टू ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल और नॉट, और स्पेशली नाउ आई थिंक आई बॉन्डेड मोर विद दीज लेडीज। पहले ठीक है इरम ने ग्रुप बनाया हुआ था, मैं कभी जाती थी और कभी नहीं थी जाती, अब मुझे होता है कि आई कैन गो, दे आर लाइक मी, आई एम लाइक मैं जैसी हूँ ये मेरी तरह की है, मैं थिंक करती थी कि मैं ही हूँ ऐसी, लेकिन नहीं, ये सब मेरी तरह की हैं, और वी हैड लॉट ऑफ फन, और हम लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए। हाँ होती है, एक दूसरे के साथ आप करते हो प्रॉब्लम, ये नहीं हो सकता कि आपको कि नहीं जी आप डिसएग्री भी करते हो बहुत सी चीजों से, but it was really nice. Nice. Really nice. We had great time. So, Sarah ji, I will come back to you because I have I've learned that your family actually supports you in all of these events. Ji, alhamdulillah. So, but now I'm going to come to Sadia ji. Sadia ji, you tell me your experience for this trip. This was also your first time? I didn't go on this trip with them. But do you want to go part? Like, was I this always something want. that Iram, when Iram told me, she already knew that I would love to be part of this, the whole event, but I was actually traveling and I didn't go. But लेकिन whenever they have anything, Iram मुझे message करती है कि we are doing this thing and I'm available, I'm always there. And क्योंकि मुझे पता है कि मुझे fun होने वाला है. It's like the best part, again I'm gonna say, is no judgment. You know कि वहां पे कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे यानी you will get hurt, you know, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, यार तुम इतनी मोटी हो, तुम कैसे चलती हो, या तुम्हारे घुटने दुखते हैं तो तुम ऐसा इतना क्यों, like you know these are part of ageism and all that. Definitely. So Definitely. लेकिन मुझे पता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, और I won't get hurt, और मैं जो हूँ वापस खुशी खुशी रहूंगी और नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी करूंगी, लेकिन मैं जरूर जाती हूँ। So we actually motivate each other. Yes, Definitely that's motivate the each other. part. Yeah. The reason why I came to this in the topic of ageism is that कि कहीं ना कहीं somewhere down the line we do get some people who say कि ये कोई उम्र है कहीं जाने की, and I have few of you had discussed this with me कि I got a little bit of this feedback कि ये कोई उम्र है कहीं trip जाने की. So let me put it this way. I have this question out here. How do you think attitudes have changed since your parents were your age, and आपको लगता है कि ये same है कि you think your parents at your age were also like, no, I'm going to continue doing what I want to do in my life, या आपको लगता है कि आप एक कदम और आगे जा चुके हैं and you're like, you know what, it's our life, हमने बच्चे को raise कर लिया है, we've dealt with our family responsibilities, now it's time to go for me to go back and shine with my experiences and go back to whatever I want to do, whether it's education, whether it's work, whether it's adventures. Right. So इसमें थोड़ा सा मैं let me respond on that. तो मुझे कहीं से नहीं मिला, दोस्तों से नहीं मिला, कम्युनिटी से नहीं, अम्मी से मिला. अम्मी कहती हैं कि बेटा क्या हो गया है, अब आराम करने के दिन है, टांगे तोड़ लोगी अपने, उम्र हो गई है तुम्हारी, तो अब घर में बैठो और घर के काम करो, बच्चे एंजॉय करो, तुम्हें क्या जरूरत है पहाड़ चढ़ने की. And we said we have the resilience, and alhamdulillah our health is a lot better than our previous gender. ठीक है हमारी भी टांगे दर्द कर जाती हैं, पर स्पिरिट है और Exactly. जोश है कुछ कर दिखाने का. I totally agree. मेरे पेरेंट्स मेरी एज में, I am alhamdulillah 52 year old, मेरी एज में मेरे पेरेंट्स they are taking medication, they are taking diabetic, blood pressure, heart disease, these kind. alhamdulillah I'm alhamdulillah कहती हूँ कि I'm much better than them. मेरे पेरेंट्स इस तरह एडवेंचर के लिए नहीं जाते थे, और मैं समझती हूँ आई एम मोर एक्टिव, एंड ये एज में आके मुझे लगता है मैं और एक्टिव हो गई हूँ.
और मेरे के सपोर्ट भी है और बच्चे भी चाहते हैं गो मामा गो Yes. जॉय तो यकीन करो, सायरा ने सारे पहाड़ चढ़े हैं जितने हमने चढ़े, या और Absolutely. और वो आगे हमेशा होती है, absolutely. मैं आगे Yes. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन अगर किसी किरण तो है ही, उनका उनकी तो स्पिरिट कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। इतनी प्यारी सी मासूम सी बनी हुई होती हैं, जब पहाड़ों पे जाती हैं तो शी इज अनबिलीवेबल। एंड आई Actually, yes, that's what, we get energy with each other. So या that's, the Definitely. motivation is there, then, you can do So हम wonders. थोड़ा सा we're getting a lot of community comments and I want to add Farzana Hakiki keh rahi hai कि I really missed the trip due to my commitments, but I would love to join the adventure. I have Sidra. She said I'm 37, but I feel like I'm an 18-year-old again, and I love traveling, and I see her traveling often too. Saima ji saying okay, Sidra ji, dil hona chahiye जवान उम्रों में क्या रखा है, I'm 37 but my heart is still 18. Absolutely. I agree. Age is just a number. यस Kiran ji ka ek comment aaya tha, I really want to join that group. Lovely ladies. I'm 44, single mom in US. So for single moms especially, I think this group would be a very आप कहते हो जब आप एडवेंचर पे जाते हो आप एक दूसरे के बारे में सीखते हो. That's the when you go on an adventure with each other is when you learn most. यस Absolutely. Um, And I just want to mention that this group is for everyone. There's no Definitely. restriction, of youth, parents, family, all are invited. But this trip, we made it ladies only trip. So otherwise most or our, hikes and events are, family oriented. family oriented. Also, we have our annual picnics and उसमें Yes. भी family oriented. So men are equally there. हमारे जो कुछ white water rafting और जो हम other adventures करते हैं, so we definitely do have youth and families there as well. And my husband is always there. You all know that in every hike, every event, he's always there to support me and, our group, mashallah. माशाल्लाह माशाल्लाह. So स्पेशली अब आप स्काई मुझे डाइविंग बताएं बहुत कि पॉपुलर है बाय द वे। इस ग्रुप की एक एक्टिविटी जो हम ईयरली करते हैं सितंबर में, स्काई डाइविंग, वो yes बहुत पॉपुलर है और उस वो ग्रुप ग्रो कर रहा है हमारा। माशाल्लाह, आई लाइक टू डू इट एवरी ईयर। इंशाल्लाह सम ऑफ द लेडीज, अभी तक हमारे पास उसमें यूथ आता है, बट मेरे इस ग्रुप में मैं शायद अभी तक अकेली हूँ। Inshallah, I will encourage a few more on my team to, jump out of the I plane. think actually on this if we someone can add the WhatsApp group, I think that would be great because this is a great way to uh, enter into the group. Beanish is also, I'm definitely interested in the next girl trips. Please share your details 2 months in advance. तो ये आपको ये details जो हैं हमारे upcoming event पे, inshallah we'll be talking about our upcoming events, trips, hiking and adventures. So inshallah you'll see that at the gala. So what we will do is we will post our WhatsApp link here. We actually post our most of our hiking trips and all other programs in that WhatsApp group because we want to do it with those who are like-minded people who are in it, and especially going on a 2-3 days trip, we prefer to go with those who have been with us and who knew us as compared to complete strangers. So we encourage everyone to start hiking with us, build up ties, build up friendship, network with us, and then inshallah we will go with more people. As Saira very eloquently said that when you are making nashta together, sleeping in same rooms together, so you need to do a little bit team building before it, and that's what we would like to do with our Empower Through Adventure group, through hiking, through horse riding, through rafting, and then going out later on as a next step. So Absolutely. coming back to our main topic, and sorry, just before Kiran says that are we having any meetups in New Jersey? All our meetups are in New Jersey. Kiran, I think she followed me from Twitter. We were having a discussion on Twitter, and she's joining in. Yes, so I just After me. want to say something about it that, yeah, so we, look for every time new parks and hiking spot and, our group member, they suggest places and sometimes they plan, so yeah, we always looking for new parks to explore because we, mashallah, explore all the, surrounding parks so far. Okay, तो अभी मैं इसको द एजिज्म टॉपिक इसको मैं थोड़ा सा और लेकर जाती हूँ कि कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में कहा था कि हम
को पता नहीं होता कि when we're actually going somebody कुछ comment कर देता है और हमें नहीं पता चलता कि whether it was an ageism comment. So here I'm gonna have some examples over here कि where do you see ageism in your life and at work, if you see any at work, but in your life कभी कभी आपको नहीं, आपके बच्चों को नहीं पता चलता या आपकी अम्मियों को नहीं पता चलता कि actually they're committing this discrimination. Okay, or it's a, you can say it's a stereotype, it's a discrimination of sort, ageism. So kuch experiences if you want to share. I know Nusra ji shared about her mom, but dusra koi, you know, where you don't realize and people don't realize that they're committing this racial act. Absolutely. Absolutely. So I will start here. So yes, so when I came back from Vegas, and even when I do hiking, so when I meet people in person, so they always encourage me, and then they, I take it that this positive always. So they always say, "Oh, if you can do it, we can do it too," and we would love to go too. And I also hear that wherever you go, we ride down all the parks, and then we go with our families. So it makes me happy that when people say if you're going, so we can go too. So I always take it positively, and I think that it's coming from the good place, not because of my age. मेरे साथ you can hear me, right? I'm having some network issue. ये हुआ है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो I just had my high school degree और मेरे बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हुए, and then I wanted to do something. तो मुझे ये कहा गया, I think Sabina, that's the reason हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब आपने कॉलेज जाके क्या करना है, आप वो पैसे अपने बच्चों के लिए सेव करें, उन्होंने आगे पढ़ना है, उनकी एजुकेशन पे लगाएं, आप पढ़ के क्या करेंगी, अब जो कर रही हैं बस करती रहें. तो मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि जो कुछ कहता है वो उसको कहने दो, तुमने जो करना है. और उनका यकीन था कि मैं कर सकती हूँ और उन्होंने कहा कि तुमने जो करना है तुम करो. और एंड देन बैक इन 2015 आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज और आई ग्रेजुएटेड इन 2018 विद मेरे बड़े बेटे के साथ. मेरा बड़ा बेटा जो उसका हाई स्कूल ग्रेजुएशन थी और मेरी कॉलेज की ग्रेजुएशन थी और मैंने उन सबको करके दिखाया क्योंकि लोग ही कह रहे थे कि तुम अब करके क्या करोगी. और फिर उसके बाद अच्छा चलो आपने पढ़ लिया तो आप जॉब नहीं कर पाएंगी क्योंकि कोई हायर नहीं करेगा आपको इस एज में. आई मीन एंट्री लेवल के ऊपर वो लोग यंगस्टर्स को हायर करेंगे, आपको क्यों हायर करेंगे. तो मैंने अपने एडमिशन एडवाइजर के पास गई, मैं उसे कहा कि मुझे तो अब ये नहीं, मैंने पैसे लगाए अपनी एजुकेशन पे तो मैं क्या करूंगी. तो उसने मुझे एक बात समझाई थी, उसने कहा कि हर कोई जो है वो एज देख के हायर नहीं करता, वो ये देखेगा कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हारे पास तुम्हारी एज के साथ जो तुमने सीखा है वो है, तुम्हारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है. फिर बहुत सारे लोग यंगस्टर्स को इसलिए हायर नहीं करते कि दे हैव देयर अदर रिस्पांसिबिलिटीज, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स, स्कूल कॉलेज तो उनके और तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, सो यू कैन स्पेंड मोर टाइम एट वर्क रादर देन स्पेंडिंग टाइम विद लाइक डे केयर के लिए नहीं भागना पड़ेगा. तो यू जस्ट पुट योर माइंड अपने दिमाग को बिल्कुल सेट रखो एंड कीप लुकिंग. और वो बात मुझे समझ में आई और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ यानी यहाँ तक मैं पहुंची हूँ सिर्फ इस वजह से कि मुझे मेरे घर वालों की सपोर्ट थी, मेरे बच्चे बहुत खुश थे, मेरे अब्बू बहुत खुश थे, मेरे मियाँ सबसे बड़ी सपोर्ट. तो ये चीज मुझे देखने को मिली, यानी लोगों ने मुझे कह दिया था कि अब आप कुछ नहीं कर सकती इस एज में, और मैंने उनको गलत साबित किया कि नहीं, आपने अगर कुछ भी करना है आप किसी भी एज में कर सकते हैं. माशाल्लाह. Yes. Very तो ये good. मेरा एक्सपीरियंस था. Definitely. Mashallah. So coming from that, Iram ji, Nusra ji, did you guys encounter anything at work, I want to say? No, Satyavana. Actually, I think people know me. And I think it's all about how you carry yourself. Work के बजाय जो कम्युनिटी है उसकी एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है फ़र्क है. अमेरिका में आके when we work, sky is the limit. When you show your potential, people don't question you as much. It's more of what the community expectation is, or community in the sense I'm talking about the smaller community जो अभी तक हम अपना पाकिस्तान का बैगेज लेके आए हुए हैं कि जो सोसाइटल रोल्स वहाँ पे
हमें डाल दिया गया है कि as mothers you have to behave certain way, as um, a certain age you have to be in a certain outlook. जी, वो ट्रेडिशनल जो हम लोग रोल्स ब्रेक कर रहे हैं, although you know we are not very crazy in any way, it's just that we are still doing the things जो हम अपनी 30s में कर रहे थे. So I think this is where we are, I think, breaking the ceiling, going above. और एंड नॉट ओनली हमारा मोटो है वुमेन टू वुमेन फोरम का, empower, inspire, and together, you know, and we are doing that. तो We are now I'm going to come to Sarah ji. Sarah ji, आपका unique experience है. Your husband runs on marathons, Yes, he does. right? And then he encourages you to also participate. Always. I uh, feel, he's very athletic जी, and he's very वो माउंट एवरेस्ट भी गए थे, फर्स्ट बेस कैंप किया है मेरे हस्बैंड ने, अब भी वो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं एंड मुझे कहते हैं करो करो, समटाइम मैं खुद ही हो जाती हूँ, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, तो मैं ये मेरी सुस्ती है कि मैं समटाइम ऐसा कर जाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही नेवर सेज कि तुम नहीं करो, ऐसी ये चीजें right. उन्होंने कभी कही, हमेशा उन्होंने encourage किया मुझे कि जाओ करो, you should do this, you should. He is other level, so I'm not like that. मैं अक्सर लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ हाँ my husband runs to, my husband do these, मैं कहा वो मुझसे ही भागते रहते हैं. तो ये सायरा की यही बात पे कहूंगी, मुझे लोगों ने पूछा कि क्या अगली बार आपने केटू चढ़ना है, तो मैंने कहा जी. और Inshallah, why फिर not? जी अब अब this is a very good thing. हम करेंगे भाई के साथ मिलके. हाँ Yeah, Miriam ji and Nusrat ji, you have this unique way कि आप लोगों के comments को लेके you turn it into a more absolutely. positive way to response back to these Absolutely. comments And that for you make. me, age is never the barrier. मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, you know, कि inshallah when I'll be 50, 60, 70, I hope कि I keep doing what I'm doing now because that's what keep me going. हाँ, And I was a very sporty person as a child. So I just, that's me from inside. I want to bring that, you know, young Iram out. I'm still trying. But inshallah, yeah, you know, age is just a number and doesn't matter what other people say, as long as you have your family support and, you know, just keep doing, keep moving forward. Ji. So here I'm gonna take some more comments because I know there's so many people commenting here. एक के बाद एक आ रहा है. Seema ji, do you want to put up some comments? Saima ji, I know you very well. Nusrat ji, always follow your Facebook activities. Mashallah, very well spoken, soft spoken lady. Bini ji, excellent. Sadia, you're an inspiration. So yes, if you want to go out or Thank if you. anyone wants to go out, कोई पढ़ाई करना चाहता है, ये कोई, there's no age. You can always go back and do live that dream that you could not dream or complete at that age. You can always come back and become what you want to become. और उसमें साथ में अच्छी सी रोटियां पकाना भी कोई बुरी बात नहीं है. हमने अपने इस लास वेगस की ट्रिप में हमने मजेदार रोज नाश्ते किए. ओ माय गॉड, अभी तक नहीं भूलती जो हम लोगों ने अपने किचनेट में वो छोटे छोटे नाश्ते जो बनाए मिलके. Definitely. And one more, I was getting the other comment from Binish. Ageism exists indefinitely, especially in South Asian communities, where women specifically, no matter what their age, are expected to stay and basically go still, especially after marriage and children. ये वो basic conception है कि शादी के बाद अब लड़की कहीं नजर नहीं आएगी, अब खामोशी से अपना घर संभाले, अपने बीवी बच्चों को देखे, अपने ससुराल वालों को, अपने फैमिली को देखे, and that's it. It's ended there. But I do want to tell you, these are all examples over here on my screen that show you can know your life doesn't end there. Your life, you can always restart your life and begin whenever you want. And every day you can recycle the next day. You can recycle. If वो एक दिन खत्म हो गया आपका, आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज भी बैलेंस कर सकते हैं. I do it, you all do it. हम अपने इवेंट्स को, अपने लाइफ को, अपनी एजुकेशन को एक साथ लेकर चलते हैं. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि शादी के बाद जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अभी घर पे बैठो,
बीवी बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को संभालो. So on your thoughts on this, Sadia ji, please. I feel like you want to add on to या this. आई वांटेड टू, ये क्योंकि वजन कम करने के लिए लोग ये कहते हैं अब तुमने पतली होके क्या करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादियां करनी है, लगना तो चाहिए ना बच्चों की माँ हो. आई मीन तो हमारी सेहत, जिम जाने की क्या जरूरत है, इतने पैसे क्यों लगाती हो जिम पे. क्या कहते हैं, वजन तो तुम्हारा कम होता नहीं है, तुम जाती हो तो क्या जरूरत है जाने की, घर पे बैठो, घर पे एक दो डंबल खरीद लो बस घर पे. आई मीन जिम जाने की क्या जरूरत है. आई मीन आपको क्या प्रॉब्लम है. Actually, I look, mean, people forget that this is not just a physical; it's also yeah, the mental and emotional, health as well that keeps us going. Even if we're not losing weight, we're keeping ourselves sane and motivated every day. That leads to, other positive things in our lives. राइट. अभी हमारा थोड़े दिन पहले एक और पैनल था, लोग क्या कहेंगे. तो Yeah. ये समझिए कि हम उसी पे ही एक दूसरे मौजू से वही बात कर रहे हैं कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ कि कोई क्या कहेगा. वी नीड टू सी व्हाट आवर जर्नी है, सोल जर्नी है, हमें अंदर से क्या डायरेक्ट किया जा रहा है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. आई मीन आई विल से कि मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स को पुश करती हूँ मेरे साथ स्काई डाइविंग पे चलो, मगर अगर किसी की हेल्थ कंडीशन है मैं उनको कभी नहीं पुश करूंगी. So you have to see where you are, where you're heading with it, but have fun. Yes, I think peer pressure एक core topic है. Maybe next year I'll push up on that peer pressure on your in the that age group, because I feel कि जहाँ पे आपने बोला कि जहाँ पे आप किसी को pressurize नहीं करोगी because of the health issues, and हमारा आज का जो trend है, it's FOMO, fear of missing out. It's very much there, and वो उससे both I think it's related to pressure and self-esteem as well, but that's a whole topic in itself. But coming that yes That's Sinhu true. ji. अच्छा. So as Nusrat said that I know I have a fear of heights. So I cannot do skydiving. I know that about me, but I still went because my daughter wanted to do it, and I just wanted to get that experience, and I loved it. So maybe in future, maybe I come to that point where I can do this. But right now, I know that that's not me. But We can go on roller coasters together. yes, हम लोग पहाड़ तो चढ़ लिए हैं इरम, साथ साथ yes. बहुत ऊंचाई पे. I know. और आई मीन वी आर गेटिंग देयर, बेबी स्टेप्स इन दैट. और मैं थोड़ी सी बोरिंग भी हूँ, मैं जब भी बैठती हूँ मैं फौरन हिस्ट्री लेके आ जाती हूँ, ज्योग्राफी लेके आ जाती हूँ और गाड़ी में सबको बोर करती हूँ. बट दैट्स माय एजुकेटर दैट कम्स आउट इन आवर these kind of get-togethers. और मैं दुनिया इसलिए देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है पहले ज़माने में जब रिटन स्कॉलर्स नहीं थे तो ट्रैवलर्स वर द रियल स्कॉलर्स. आप जब दुनिया देखते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, उनका लाइफस्टाइल आप ऑब्जर्व करते हैं, you automatically, your horizons become wider and you Absolutely. get a better perspective towards the world. And you expand, of course, your knowledge expands, you learn other cultures, you adapt Yeah. their culture in a way because you're learning about them and you see कि वो क्यों है तो कैसे हैं. Sadia, I'm going to come back to you. Reason being, there's another factor हम कहते हैं, because I want to talk about ageism specifically. Not necessarily that we've experienced it, but हम कभी-कभी, even when we're driving the car, now when the kids get their licenses for the first time and वो कहते हैं कि भाई हम गाड़ी चलाएंगे, तो कभी-कभी हम कहते हैं अम्मी अब आप बैठो, अब मुझे नहीं बैठना, अब मैं I can drive now, you don't need to drive anymore. What do you think is with those children, if you can backtrack on like these kids, what's going in their mind? They're obviously not, it's not their they don't want to break anyone's confidence or any of that sort, but do you think it's something that we just never speak to our children about maybe, or या आप बच्चों को स्कूल पिक करने जाते हो, ड्रॉप करने जाते हो, आप उनको हक दे दो या किस कर दो उनके फ्रेंड्स के सामने, तो वो लोग एम्बैरेस हो जाते हैं कि तुम लोग मुझे हक क्यों कर रहे हो, अभी इतने बड़े हम बड़े हो गए अब, या तुम जो है वो गाड़ी कैसे चला रही हो, या हमें पिक करने के लिए आओगे तो दूर से कॉर्नर से पिक करना, किसी को पता नहीं चले कि तुम पिक करने के लिए आई हो, क्योंकि हम लोग एम्बैरेस हो जाएंगे कि अभी भी हमारी मॉम जो है वो हमें पिक करती है. गाड़ी चलाने के लिए तो खैर मेरे बच्चों ने कभी नहीं रोका, क्योंकि वो कहते हैं कि it's better that you drive when we are sitting, क्योंकि तुम बोलती रहोगी कि तेज क्यों चला रहे हो, ऐसा क्यों चला रहे हो, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया.
तो लेकिन ये कि ये चीज़ अपनी जगह है कि हम लोग मुझे लगता है कि जब मेरी अम्मी इस एज में थी, जिस एज में मैं हूँ इस वक़्त, तो मेरा भाई और फिर वही बात पाकिस्तान में या जैसे मैं सऊदीया में, हम लोग वहाँ पे ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है, तो आपको हर जगह आदमियों के साथ ही जाना पड़ता है। तो लेकिन ये कि वो आप सही कह रहे हो कि वो अपनी जगह पे है कि अब आप जो है ना वो बस आप गाड़ी ठीक नहीं चलाती हैं, और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे कहते हैं कि नहीं आप रहने दें, आप हम लोग खुद ही चला लेंगे, आप गाड़ी जो है वो कॉर्नर से हमारी गाड़ी खराब कर देंगी, आप कॉर्नर से जो है वो लग जाएगी आपसे, आप रहने दें, आप हमारी गाड़ी खराब कर देंगे। लेकिन शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे जो है वो अपनी गाड़ी दे देते हैं मुझे और मैं चला लेती हूँ। बल्कि एक आध दफा ऐसा हुआ है कि उनकी स्पोर्टी लोग की है गाड़ी, तो किसी ने रेस लगाने की कोशिश की है, और मैं अपने बेटे को कह रही हूँ उसको ये पता नहीं है कि उसकी मॉम चला रही है, तुम नहीं चला रहे हो उसका। तो लेकिन ये कि ये अपनी जगह है और ये अपनी रहेगा पाकिस्तान से आने वाले, अभी भी पाकिस्तान में लोग इसी तरह के लोग जो है वो माँ जो है वो गाड़ी नहीं चला सकती। मैं मेरी अपनी भाभी जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक गाड़ी चलाती, लेकिन माशाल्लाह बेटा बड़ा हो गया तो बेटे के साथ बैठ के जाती है, I think this is क्योंकि more back home than here. Yeah, यहाँ के बच्चे मुझे लगता है, with my experience, they want you to do things on your own. So they keep telling you, you can do it, mom. Go ahead. Why aren't you doing it? You know, so this is a little different. But yes, yeah, when I see my mom, mashallah, she's with me. So yeah, I have seen her that, stop doing most of the things after a certain age, and I don't want to be that. I want to keep going. I want to still live young at heart, no matter what age it is. So yes, but I do want to mention that unfortunately I do hear this from my own peer, with my community and friends, that यार अब क्या है, अब तो ये एज हो गई है, तो अब हम ये करके क्या करेंगे. So I tell them one on one also, or in a group also, no, age is just a number. You can still do, don't think that way. We can still do whatever we want to do. So yes. तो Do you want to add, Mr. हाँ, हम दूसरी चीज, हम लोग एक्चुअली अमेरिका में आ गए हैं, यहाँ इतने खूबसूरत पूरे मुल्क में चीजें मौजूद हैं और हम लोग एक्सपोज नहीं हैं. तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो आपके होराइजन्स एक्सपेंड होते हैं जब आप दूसरी जगह जाते हैं, बट जब आप टीम मिलके जब जाते हैं, उसकी ब्यूटी ही दूसरी है. वो जैसे बचपन में आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सा टाइम गुजार लेते थे ना, और कितनी एक्साइटमेंट होती थी, ऑल दैट केम बैक विद दैट ट्रिप. कि जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है और हम हैं और दोस्तें हैं, और यहाँ पे क्योंकि दोस्तें हैं तो फलानी जगह नाश्ता करना है और इधर नहीं करना, ऑल दैट जहाँ कंसेंसस मिला वहाँ निकल गए. तो डेफिनेटली वी आर फीलिंग ourselves to be with that kind of people who are maybe, of course, not in their teenagers, and we are not in our teenagers, but we are still feeling the same way. तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है. आई थिंक ये लॉन्जेविटी आपको देती है. आप बीमारियों से दूर रहते हैं जब आप इस तरह खुश फील करते हैं, और इट देन यू क्रेव फॉर दैट फीलिंग ओवर एंड ओवर अगेन. तो इंशाल्लाह हम जल्दी प्लान बना रहे हैं एक और समर का जाने का. And it gives you feeling of independence also. Definitely. We had wonderful Independent. ladies in this group, mashallah. Then everybody took the different responsibility. We had Farah. She was automatically was in charge of all our Yeah. money related issue. And we had Shaila, we had Nusra, Saira, and myself, and Farhana. So we all kind of pitched in and took different responsibilities and made this trip, mashallah, successful. तो सायरा जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपके बच्चे हमेशा सपोर्टिव रहे हैं जी. तो आर दे वो अभी आपका नेक्स्ट ट्रिप आएगा, उनका क्या रिस्पांस था इस ट्रिप से, एंड आर दे लुकिंग फॉरवर्ड कि मॉम आई थिंक यू हैड अ ग्रेट टाइम, आप फिर से जाइएगा? मेरा यंगर वन, ही इज 17, ही इज टर्निंग 18. मुझे कहता है ऐसे बैठा हुआ कहता है मम्मा व्हाट हैपेंड. तो मैंने कहा क्या, तो फिर जा रही हो? मैंने कहा हाँ, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप. तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि मेरा यंगर बेटा मुझे कह रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू. तो मैं They're not used to it, so yes. तो मैं ये भी ऐड करूंगी कि आप मेंटली तौर पे ना आप बड़े रिफ्रेश होते हो आप जब जाते हो इस ग्रुप के साथ. मतलब किसी भी ग्रुप के साथ आप जाएं,
आई थिंक यू नीड समबडी, और मुझे लगता है कि आपको वो बंदा चाहिए जो आप अपनी ना अपना गार्बेज भी फेंक सको। Like a no judgment zone. Yes. That's what it is. No No judgment judgment zone. zone. और और एज मेरा या एज इज जस्ट अ नंबर। और मेरा अपना ये ख्याल है कि जैसे आप अच्छा महसूस करते हो, जो आप अंदर से महसूस करते हो, वो आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनालिटी पे उसका Yeah. अक्स पड़ता है, आप वो बेशक। रिफ्लेक्ट करते हो। अगर आप खुश हो तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी, आपकी आप अगर खुश हो तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। और वो फिर अगेन एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आपकी अगेन दैट टॉपिक जो है वो ऑफ टॉपिक हो रहा है कि मेंटल हेल्थ इट्स ऑल, आप अपनी बात कर लोगे खवातीन के साथ मिलके और रिलैक्स हो जाते हो, यू फील रिलैक्स। आई मीन आप 5 खवातीन इकट्ठी होती हैं, आई मीन अच्छी दोस्तों की बात कर रही हूँ, आप यू स्ट्रेस फॉर समथिंग, यू जस्ट गो देयर, डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट इवन टॉक अबाउट दैट टॉपिक व्हिच इज स्ट्रेसिंग यू, बट यू जस्ट गो देयर लंच के लिए। अभी थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड्स सब इकट्ठी हुई कि जल्दी से लंच पे आ जाओ। लंच टाइम में मैं भागी हूँ, लंच करने के लिए गई हूँ, आई वाज स्ट्रेस्ड कि पूरी पीछे गर्दन खिंची हुई थी, एंड आई वेंट देयर सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक 5 में आधा घंटा पौना घंटा मैं बैठी हूँ, जल्दी से लंच करके वापस भागी हूँ, एंड आई वाज सो रिलैक्स, क्योंकि हंसी मजाक आपका दिमाग जो है वो फ्रेश हो गया, हट गया उस टॉपिक से। तो आपको इस तरह की दोस्तें चाहिए होती है जहाँ पे आप जाके आप जस्ट True. रिलैक्स हो जाए। True. And that's true. And I think it is also, I mean, of course, ageism, kisi bhi, yeah, racial discrimination or anything like that is also related to your mental health. So you are actually on topic on this, I want to add. And Seema ji पूछिए कि where do you share your information on this trip? वो हमारी Empower through Adventure वाली ग्रुप में है, उसका लिंक हम इस पैनल के नीचे भी लिख We देंगे। have a You can WhatsApp join group. it. Yeah. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है। अगर आप हमारे गैला पे आ रहे हैं कल, इंशाल्लाह इरम जी विल गो ओवर द प्रोग्राम, यू कैन ऑल्सो साइन अप देयर। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगेन इट्स नॉट ओनली फॉर लेडीज, ये it's for everybody, it's for families. The trips, currently the trips are for women only, but inshallah ta'ala, if we get an amazing amount of response, maybe we can have a tour group go somewhere on a tour trip. होते हैं कितने सारे I know Turkey, and a lot of people like to go to Turkey and Pakistan ki bhi, even Pakistan ke jo northern areas हैं, because we We don't have get to so explore many those things in the northern areas. pipeline. So Inshallah. maybe we can plan a bigger trip. Yeah, Sheila ji वापस आती हैं तो Sheila ji and Nusra ji, maybe you guys can arrange a bigger platform. How can you guys add me on the WhatsApp group? I will add the link right here, so you can just click on it. Saima ji, you can join the WhatsApp group. So lots of people are, I guess we're gonna have a lot more members this year, inshallah. And thank you, ladies, because आप लोगों ने जो experiences share किए हैं, and I think a lot of people will understand now that not that even though this has turned into more of an empower through adventure trip, even that includes age. उसमें you have ladies of all ages. Their families are supporting them. Their kids are supporting them. यस And life doesn't end at 40. Absolutely. Closing comments, Nusra ji? क्लोजिंग कमेंट मेरा मेनली यही है कि हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड की जो ख़वातीन हैं, हमें आदत है सोशलाइज़ करने की, और हम अभी तक सोशलाइज़ करने का एक ही तरीका ढूँढते हैं कि अरे चलो कुछ खाते हैं। So this is something more than that. Socialize करो and network करो, क्योंकि there is a slight difference between the two. Network करने का मतलब है अपने आप को uplift करो in some direction, in career, in community development or in other aspects of life. So हमारा ये जो sisterhood का cultural concept है, socializing का cultural concept है, इसको हमें अब creatively इस मुल्क में इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरह के हमारे ग्रुप हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे ही ग्रुप को जॉइन करें। अगर इस वक्त हमारा ये मैसेज पहुंच रहा है far and beyond, we need to create similar groups at other places as well and empower each other by connecting with each other in a creative way. And there is no other creative way than going outside, walk together, do exciting things together. Iram ji, would you like to add on to that? Yeah, I'm gonna just, I agree with Nusrat, and
even here people sometimes say, oh, you're keeping this thing very far, we cannot come. So we try to plan nearby, like all tri-state. But even if you can join our group, join anything, join your recreation program. They have walking club. Actually, I started from recreation walking club that got me into this. So yeah, do something, move, and meet other people. You all need that. सायरा जी. मैं कहूँगी कि जी आप जो हैं अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और बच्चों की खुशियां देखना चाहते हैं, एज का कोई मैटर नहीं होता. यू बी एक्टिव और किसी ना किसी ग्रुप के साथ आप कनेक्ट करें और उसके साथ आप जाएंगी बाहर, देन यू मीट मोर पीपल और अच्छे लोग मिलते हैं आपको. और आई थिंक वी शुड बी एक्टिव इन एनी एज, चाहे 80 ईयर ओल्ड है चाहे 90 ईयर ओल्ड है, यू शुड बी एक्टिव इन एनी एज और ये बस करें. Absolutely. सादिया जी. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी 40 पे खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है, क्योंकि बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज इतने बड़े हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं. तो दैट्स द टाइम टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. अगर आपने अपने आप को निगलेक्ट किया है 40 साल तक, तो अभी भी वक्त है, आप वापस जो है अपने ऊपर तवज्जो दे सकते हैं और वापस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं. जो चीज़ें आप करना चाहते थे, आप छोटी उम्र में आप बच्चे हो गए और आप वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए. जैसे फॉर मी, मैंने न्यूयॉर्क सिटी के पास रहते हुए भी बहुत कुछ नहीं देखा और मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे छोटे थे, रो रहे हैं, बीमार हैं, नाक बह रही है, कुछ भी हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, या प्रोग्राम बनाया तो कैंसिल हो गया, बच्चा बीमार है. तो वो चीजें जो आप नहीं करना चाहते थे, वो अब 40 के बाद आई थिंक इज द टाइम टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोज थिंग्स एंड डूइंग दोज थिंग्स जो आप करना चाहते थे. तो बहुत सारे लोग जो हैं 40 के बाद जिंदगी शुरू करते हैं. Definitely. Thank you everyone. Thank you ladies. Thank you everyone जिन्होंने comment किया है. And अगर आप लोगों को ये conversation अच्छा लगा है, so please share it on your platforms. आप share करेंगे तो 5 और encourage होंगे. So thank you everyone. Thank you for your time. And Thanks for inshallah having we'll us. meet at the gala. Thank you. Okay. Bye. Inshallah. Inshallah.